Tasmai Shri Gurave Namaha. Ajnanatimirandasya Jnanashalakaya Chakshurumilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Guru Brahma Guru Vishnu Guru Devo Maheshwara Guru Sakshat Param Brahma Tasmai Shri Gurave Namaha. Stavaram Jagamam Yaktam Yaktichi Sacharacharam Tatparam Darshitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Bhavaji Yapya Sarvam Trilokyam Sacharacharam Tatparam Darshitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Sarvashruti Shiroragna Virajita Padambuja Virudambuja Suryoya Tasmai Shri Gurave Namaha. Chaitanyam Shashavashanto Vyomatito Niranjana Bindunada Kalatita Tasmai Shri Gurave Namaha. Jnana Shakti Samaroda Tattvamala Vibhushita Bhukti Mukti Pradata Cha Tasmai Shri Gurave Namaha. Aneka Jampa Samprapta Karma Bandha Vidahine Atmajnana Pradhanena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shoshanam Bhava Sindosha Jnapanam Sarasampara Guru Padodakam Samyak Tasmai Shri Gurave Namaha. Na Guru Radhikam Tattvam Na Guru Radhikam Tapah Tattvajnanat Param Nasti Tasmai Shri Gurave Namaha. Manata Shri Jagannatha Madguru Shri Jagadguru Manatma Sarva Bhutatma Tasmai Shri Gurave Namaha. Guru Radhira Nadisha Guru Paramadevata Guru Parataram Nasti Tasmai Shri Gurave Namaha. Tvameva Mata Cha Pita Tvameva Tvameva Bandhuscha Sakha Tvameva Tvameva Vidya Dravinam Tvameva Tvameva Sarvam Mama Deva Deva Tvameva Sarvam Mama Deva Deva. Guru Sharanam Satguru Sharanam Shri Vishwananda Guru Sharanam 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 Guru Sharanam Shri Guru Sharanam Shri Vishwananda Guru Sharanam Guru Sharanam Satguru Sharanam Shri Vishwananda Guru Sharanam Guru Sharanam Satguru Sharanam Shri Vishwananda Guru Sharanam Guru Sharanam Satguru
Guru Sharanam, Shri Vishwananda, Guru Sharanam, Guru Sharanam, Sadguru Sharanam, Yogi Raja, Guru Sharanam, Guru Sharanam, Sadguru Sharanam, Yogi Raja, Guru Sharanam, Guru Sharanam, Sadguru Sharanam, Shri Vishwananda, Guru Sharanam, Guru Sharanam, Sadguru Sharanam, Shri Vishwananda, Guru Sharanam, Prema Svarupa, Guru Sharanam, Shakti Pradayaka, Guru Sharanam, Prema Svarupa, Guru Sharanam, Shakti Pradayaka, Guru Sharanam, Guru Sharanam, Sadguru Sharanam, Shri Vishwananda, Guru Sharanam, Guru Sharanam, Sadguru Sharanam, Shri Vishwananda, Guru Sharanam, Jnana Svarupa, Guru Sharanam, Vidya Pradayaka, Guru Sharanam, Jnana Svarupa, Guru Sharanam, Vidya Pradayaka, Guru Sharanam, Guru Sharanam, Sadguru Sharanam, Shri Vishwananda, 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 Guru Sharanam, Guru Sharanam, Shri Guru Sharanam, Shri Vishwananda, Guru Sharanam, Guru Sharanam, Sadguru 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 Sharanam, Yogi Raja, Guru Sharanam, Guru Sharanam, Sadguru Sharanam, Shri Yogi Raja, Guru Sharanam, Guru Sharanam, Sadguru Sharanam, Shri Vishwananda, 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 Guru Sharanam, Prema Svarupa, Guru Sharanam, Shakti Pradayaka, Guru Sharanam, Prema Svarupa, Guru Sharanam, Shakti Pradayaka, Guru Sharanam, Guru Sharanam, Sadguru Sharanam, Shri Vishwananda, 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 Guru Sharanam, Jnana Svarupa, Guru Sharanam, Vidya Pradayaka, Guru Sharanam, Jnana Svarupa, Guru Sharanam, Vidya Pradayaka, Guru Sharanam, Guru Sharanam, Sadguru Sharanam, Shri Vishwananda, Guru Sharanam, Guru Sharanam, Sadguru Sharanam, Shri Vishwananda, Guru Sharanam, Guru Sharanam, Shri Guru Sharanam, Shri Vishwananda, Guru Sharanam, Guru Sharanam, Sadguru Sharanam, Shri Vishwananda, Guru
Guru Sharanam Satguru Sharanam Sri Vishwananda Guru Sharanam. Om Avatara Shishai Namaha, Om Vishwamai Namaha, Om Devakara Samujatai Namaha, Om Sukshmatanave Namaha, Om Chinmayai Namaha, Om Gurumurtaye Namaha, Om Sundarai Namaha, Om Sulochanai Namaha, Om Sumukhay Namaha, Om Charvasai Namaha, Om Keshavai Namaha, Om Padmabhujai Namaha, Om Andagamanai Namaha, Om Charumbaradarini Namaha, Om Ramai Namaha, Om Mandirastapakai Namaha, Om Shri Bhabajakai Namaha, Om Gayatri Ajhave Namaha, Om Arpana Svikarakai Namaha, Om Vishnu Pujakai Namaha, Om Namo Narayanyeti Mantrapasakai Namaha, Om Svaramayai Namaha, Om Andurakratai Namaha, Om Krishna Sankirtalalabhai Namaha, Om Sutapriyai Namaha, Om Nitabashini Namaha, Om Vakmini Namaha, Om Chitrakala Visharadai Namaha, Om Vratadarai Namaha, Om Sarave Namaha, Om Jagatpantai Namaha, Om Sarvalokaitai Namaha, Om Bhaktapriyai Namaha, Om Surdai Namaha, Om Anukulai Namaha, Om Neyai Namaha, Om Sudarshanai Namaha, Om Bhaktavatsalai Namaha, Om Primamurtaye Namaha, Om Subhekshanai Namaha, Om Pritivardhanai Namaha, Om Swastidayakai Namaha, Om Tarakai Namaha, Om Anugrahai Namaha, Om Vardhanai Namaha, Om Achitai Namaha, Om Artai Namaha, Om Siddhipradai Namaha, Om Janardhanai Namaha, Om Anwarai Namaha, Om Ashai Namaha, Om Siddheshwarai Namaha, Om Bhasmabhushitai Namaha, Om Matmalingai Namaha, Om Lingachana Pratasakai Namaha, Om Siddhisaranai Namaha, Om Madhavai Namaha, Om Amparapasakai Namaha, Om Sukshmai Namaha, Om Vishwakai Namaha, Om Sattvikai Namaha, Om Samadarshine Namaha, Om Dakshai Namaha, Om Achintyaya Namaha, Om Nirankaraya Namaha, Om Vimohaya Namaha, Om Avyagrai Namaha, Om Chitagrodai Namaha, Om Vinayashilai Namaha, Om Slavashai Namaha, Om Kushalai Namaha, Om Kshamai Namaha, Om Satyadharmai Namaha, Om Nivikalpai Namaha, Om Viraktai Namaha, Om Atidyai Namaha, Om Satyasandhai Namaha, Om Pavitrai Namaha, Om Mandurasvabhavai Namaha, Om Surandanai Namaha, Om Nandanai Namaha, Om Prasanatmane Namaha, Om Bhakranidaye Namaha, Om Sakshaye Namaha, Om Samatmaye Namaha, Om Sarayogine Namaha, Om Haraye Namaha, Om Sutapai Namaha, Om Samyai Namaha, Om Guriyai Namaha, Om Vimutatmai Namaha, Om Kabirai Namaha, Om Guptai Namaha, Om Atmaramai Namaha, Om Srinivasai Namaha, Om Devai Namaha, Om Judikarai Namaha, Om Danyai Namaha, Om Gurave Namaha, Om Duratikramai Namaha, Om Dhanai Namaha, Om Bhagavate Namaha, Om Harishara Margadashakai Namaha, Om Kutashajagatakaai Namaha, Om Abhiprayai Namaha, Om Sarvamata Samatyai Namaha, Om Shamata Bhavavardhakai Namaha, Om Premavatara Sri Vishwananda Swami Namaha. Ato Deva Avantano Yato Vishnu Vichakrame Harivya Saptadamapi Idam Vishnu Vichakrame Tretani Tate Padam Samodamasya Bhagum Sure Meni Pada Vichakrame Vishnu Gopadabhya Ato Dharmani Dharayana Vishnu Karmani Pashyata Yato Vidani Paspase
इन्द्रस्य युजस्वगा तद्विष्णो परमं पदगुं सदा पश्यन्ति सूर्या दिवेव चक्षुरततं तद्विप्रसो विपन्यवो जागरो भावं ससमिन्दते विष्णो यत् परमं पदम् सद्गुरुदेवाय धीमहि तन्नो विश्वानन्द प्रचोदयात्। ॐ प्रेमवतराय विद्महे सद्गुरुदेवाय धीमहि तन्नो विश्वानन्द प्रचोदयात्। ॐ प्रेमवतराय विद्महे सद्गुरुदेवाय धीमहि तन्नो विश्वानन्द प्रचोदयात्। वक्रतुण्डा महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। श्री कृष्ण विष्णु मधुसूदन केतपाले नारायणाच्युत त्रिविक्रम चक्रपाले वेदारि सागर श्रीधर वासुदेवा गोपाल कृष्ण हरये तव सुप्रभातम्। श्री रुक्मिणी भवनाचारे मुरारे राधेश गोपच स्वरूप भवानि वन्द्या श्रीरारकंसर वैकुण्ठपते भुवनेकमूर्ते गोपाल देवारये तव सुप्रभातम्। मीनाकृते तमदरूप वराहमूर्ते देवी रमाय भुवने गुरुराम राम श्रीराम कृष्ण यदुनन्दन कल्किरूप गोपाल कृष्ण हरये तव सुप्रभातम्। गोविन्द माधव मुकुन्द परपरेश दामोदर नन्दन हरिशोरी गो गोप गोपीजन संवृत दीनबन्धो गोपी जना प्रिय हरे तव सुप्रभातम्। श्रीरप्ति साई भजगारि पताय साई सर्वभक्त वत्सल साई रमंग साई श्री गोपमान मनुकल्प सुधारि साई गो गोप वल्लभ हरे तव सुप्रभातम्। श्री कश्यपति सुख नारद गौतमादि ब्रह्मर्षि संगमणि संग भवारकेश
भूयः गायन्ति सद्गुणगणो वरराजभागः संकीर्तयन्ति तव नाम कदा विशेषः श्रीनारदारि ऋषयः तव सुप्रभातम् गोवर्धनोरन गोपकिशोर गोपा गोपीजनामृत सुवेश भवाधिपोता त्रैलोक्यमोहन सुमङ्गल दिव्यदेहा श्रीरुक्मिणीश वरदा तव सुप्रभातम् श्रीवत्स क्षीरशरणागत पारिजाता भक्तातिभञ्जन कृपाकर दीनबन्धो श्रीयत्र गायति जनाप्रिय दिव्यरूपा श्रीनन्द गोपतनया तव सुप्रभातम् पद्माक्ष पद्ममुख पद्मधर प्रमेय पद्मालय सौर पद्मनिवास शौरी पद्मोपभाति सुरसेवित पार पद्मा पद्मादिनाथ हरये तव सुप्रभातम् वृन्दातले विहरणाय महेन्द्रवन्द्या नन्दापदार्पारतिन्य सुरेशरूपा चन्द्राननाय शिरचन्दननिर्ददेहा गोविन्द यादव हरे तव सुप्रभातम् श्रीनन्दनन्दन यशोरकुमार धीरा न्यायाङ्कदीन रविशोन सुपुष्पहारा नीलम्बुधार सुशरीर रमा विहारा गोपाल देव हरये तव सुप्रभातम् श्रीपश्य जम्बवति सत्य सुगन्धि भद्रा श्रीमित्रविन्द्र दिवसा प्रभुपुत्रिकाद्यये तिष्ठन्ति दिव्य भवने तव सेवनार्थम् गोपीमना प्रिय हरे तव सुप्रभातम् श्रीकृष्ण अच्युत अनन्त मुकुन्द शौरी राधा मनोहर जनार्दन चक्रपाणे नामानि दिव्यमुनयो न विशम्भरन्ति ब्राह्मी मुहूर्त समये तव सुप्रभातम् श्रीकृष्ण सुप्रभातम् श्रीपतति नार्निशा भुरे कृता मम पापम् श्रीकृष्णाग्राये तोगा ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्वकारण कारण गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि चित्तमणि प्रकर सन्म सुकल्पविश्य लक्षावितेश सुरवीर विपालयन्तम् लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम् गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि रेणुं कनन्तमरविन्दरयाय कर्षम् गन्धर्वकोटिकमनीय विशेष शोभा गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि नलोल चन्द्रकल सत्त्वनमाय वंशे रत्नाकरं प्रणय केलिकला विलासं श्यामं त्रिभङ्गललितं नियता प्रकाशम् गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि आज्ञानि यस्य सकलेन्द्रियवृत्तिमन्ति भाषन्ति पन्ति कलयन्ति शिरं जगन्ति आनन्दचिन्मय सरुण
ज्वलवीरहस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अद्वैतमच्युतमनादयनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनश्च वेदेषु दुर्लभमदुर्लभमप्रभातो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अन्तस्तु कोटिशतवत्सरसम्प्रभव्यो अयोरतापि मनसो मुनिपुङ्गवानं सोऽप्यस्ति अप्रतविचिन्त्यनिचिन्त्यतत्त्वे गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि एकोऽप्यसोरचकितुं जगदं न कोटिं यक्षाक्षिरस्ति जगदन्तरन्तः अन्तरस्तपरमान्युचयन्तयस्तं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यद्भावभावितदिव्यो मनुजस्तथैव सम्प्राप्य रूपमहिमा सनयानभूषः शुक्तिर्य एव निगमं प्रतिदस्तु भन्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आनन्दचिन्मय रस प्रतिभाविताभि कावीर्य एव निजरूपतया कलाभि गोलोक एव निवसत्यखिलात्मबुद्धो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि प्रेमाञ्जनाचरितभक्तिविलोचनेन सन्ता सदैवैरदेषु विलोकयन्ति यं श्यामसुन्दरमचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि रमादिमूर्तिषु कलानि यमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्णद्वयं समवनः परमः पुमन्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्या प्रभा प्रभवतो जगदं न कोटिषु शेषवसुधारि विभूतिपीनं तत्ब्रह्मनिष्कलमनन्तः शेषभूतं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि माया यस्य सकलन्दशतानि सूत्रे त्रैगुण्यतातिशयवेदवितायमान सत्त्वावलम्बि परसत्त्वविशुद्धसत्त्वं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि आनन्दचिन्मय रसात्मतया मनस्सु या प्राणिनां प्रतिपलं स्मरतानुपेत्य लीलालितेन भुवनानि जयानि यस्त्रं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोलोकनम्नि निजनम्नितले च तस्य देवी महेश हरिरामसुतेषु तेषु ते प्रभावनिचया विनिचश्रयेण गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि सृष्टिस्थितिप्रलयसाधनशक्तिरेका चायेय यस्य भुवनानि विभाति दुर्गा ईशानरूपमपि यस्य च चेष्टचेष्टा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि क्षीरं यथा दधिविकारविशेषयोगात् सञ्जायते नैतथा प्रति अस्ति हेतुः यः शम्भुतं विदधाति
दीपायते विविधयेतु समानधर्म यस्त्रातिदेव च विष्णुचया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यकारनामकले भजति स्वयोगा नीत्रमनन्तजगनन्द सरोमकूपः आधारशक्तिमवलम्ब्य परस्वमूर्ति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्यैकनिश्वसितकालमतावलम्ब्य जीवन्ति लोमविलजा जगनन्दनाथः विष्णो महंसय यस्य कलाविशेषो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि भस्वान्यतस्म सकलेषु निजेषु तेजा धियं धियात्मपतियात्मपितत्वहत्र रामाय एष जगदन्धविधानकर्ता गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यत्पादपल्लवयुगं गिरिराय कुम्भ वन्दे प्रणामसमये सगणाधिराजः वीणां निहन्तु ममलस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अग्निर्मयी गगनमम्बुमरुति शस्य कालस्तत्ममनसि जगत्त्रयानि यस्मान् भवन्ति विभवन्ति विशन्ति अंश गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यक्षुरेश सविता सकलागहानं रजसमस्तसुरमूर्ति यशेषतेजः यस्यन्द्रयाङ्गमति संवृतकालचक्रो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि धर्मोदपापनिचयाशदयस्तपंसि ब्रह्मादिकीटपदगावदयस्य जीवः यात्रादमात्रविभवा प्रकटा प्रभावा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्मिङ्गलोपमलविन्द्रमहोत्सकर्म वरदानरूपफलभाजमनातनोति कर्माणि निर्दहति किन्तु च भक्तिभाजन् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यं क्रोधकामसहजा प्रणयादिभित्ति वत्सल्यमोहगुरुगौरवसेव्यभावै सञ्चिन्त्य शास्त्रे सरिसिं प्रभुमपुरेते गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि ईश्वर परमकृष्ण सच्चिदानन्द विग्रह अनादिरादिर्गोविन्द सर्वकरणकरण गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि
गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूत यच्च भाव्यं हुतामृतत्वाशेषानः यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमाम् अतो जायागुश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादास्यामृतं दिवि त्रिपादुर्वादे पुरुषः पादोऽस्य भवात् पुनः ततो विश्वं व्यक्रामते शासनानशने अभि तस्मात् विराजजायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भूमिमतो पुरः यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वता वसन्तो अस्य सीताजम् ग्रीष्म इद्म शरदभिः सप्तास्यासन् परिदयः त्रिसप्ता समिदः कृता देवा यज्ञं तन्वाना अबध्नं पुरुषं पशुं तयज्ञं बर्हिषि प्रोक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त सार्या ऋषयश्च ये तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः संवृतं पृषदाजं पशुगस्तागश्चक्रे वायव्यान् आरण्यान् ग्राम्याश्च ये तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचसामानि चग्निरे चन्द्रागुंसि चग्निरे तस्मात् यजुस्तस्मात् जायत तस्मादश्वा अजायन्त एके चोभयादतः गावो हजग्निरे तस्मात् जाता अजाभयः यत्पुरुषं व्यदनुः कथिता व्यकल्पयन् मुखं किमस्य कौ बाहु कावोरुपादावुच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः उरोधस्य यद्वैश्यः पद्भ्यागं शूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणाद् वायुरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षं शीर्षोऽद्यौ समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात् तथा लोकाकुम् अकल्पयन् वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे सर्वाणि रूपाणि विचित्य वीरः नामानि कृत्वा बिभदन्यदास्ते दाता पुरस्तादमुदा जहार शक्र प्रविद्वान् प्रदिशश्चतस्रः तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यपन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ते अनाकं महिमानः सचन्ते यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः अभ्यासम्भूतपृथिव्येरसा च विश्वकर्मणः समवर्ततानि तस्य त्वष्टा विदधा रूपमेति तत्पुरुषस्य विश्वमाचानमाग्रे वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेवं विद्वानमृत इह भवति नान्यपन्था विद्यते यनाय
प्रजापति चरति गर्भे अन्तः अजायमानो बहुधा विजायते तस्य धीरा परिजानन्ति योनिम् मरीचीनां पदमिच्छन्ति वेदसः यो देवेभ्यः तपति यो देवानां पुरोहितः पूर्वो यो देवेभ्यो जातः नमो रुचाय ब्राह्मये रुचं ब्राह्मं जनयन्तः देवा अग्रे तदा ब्रुवन् यस्वैवं ब्राह्मणो विद्यात् तस्य देवा संवशे क्रीश्चते लक्ष्मी च पत्न्यो अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम् अश्विनो व्यातम् इष्टं मनिषाना अमुं मनिषाना सर्वं मनिषाना तच्चयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः पूर्वं जिगातु देशशं शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नावदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य द्विरदवक्त्राय पार्श्वाय पराशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तिपुत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठायै नमो नमः अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने सदेकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ॐ नमो विष्णवे प्रभविष्णवे श्रीवैष्णवाय श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरा शान्तनां पुनरेवाभ्यभाषिता श्रीयुधिष्ठिरा उवाच किमेकं देवतं लोके किं वाप्येकं परायणं सुवन्तं कं कमर्चन्तः प्राप्नुयोर्मानवः शुभम् को धर्मः सर्वधर्माणां भवता परमो मतः किं जपान्मुच्यते जन्तुर्जन्म संसारबन्धनात् श्रीभीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवम् अनन्तं पुरुषोत्तमं सुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम् ध्यायन् सुवर्णमस्यं च यजमानस्तमेव च अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकामहेश्वरं लोकाध्यक्षं सुवन्नित्यं सर्वदुःखादिगो भवेत् ब्रह्मण्यं सर्वधर्माण्यं लोकनं कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महाभूतं सर्वभूताभवोद्भवम् एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवेरर्चेत् सदा परमं यो महत्तेज परमं यो महत्तपः परमं यो महत्ब्रह्म परमं यःपरायणं पवित्राणं पवित्रायो मङ्गलानां च मङ्गलम् देवतं देवतानां च भूतानां यो व्ययपिता यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादि युगागमे यस्मिन् च प्रलयं यान्ति पुनरेवायुगाश्रये तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णुर्नाम सहस्रमे शृणु पापाभयावहम् यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि मूर्तये ऋषिर्नाम्नां सहस्रस्य वेदव्यासो महामुनिः छन्दोनुष्टुप् तथा देवो भगवान् देवकीसुतः
अमृतं श्रुतभो बीजं शक्तिर्देवाखिनन्दनः त्रिस्सामाहृदयं तस्य शान्त्या ते विनियुज्यते विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभाविष्णुं महेश्वरम् अनेकरूपदेत्यन्तं नमामि पुरुषोत्तमम् अस्य श्री विष्णुर्दिव्य सहस्रनाम स्तोत्र महामन्त्रस्य श्री वेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्री महाविष्णु परमात्मा श्रीमन्नारायणो देवता अमृतां श्रुतभो भानुरिति बीजम् देवकी नन्दनश्रेष्ठेति शक्तिः उद्भव शोभनो देव इति परमो मन्त्रः शङ्खबृन्दकी चक्रीति कीलकम् शङ्खदं वा गदाधर इत्यस्त्रम् रथङ्गपाणिरक्षोभ्य इति नेत्रम् त्रिसामेति कवचम् आनन्दं परब्रह्मेति योनिः ऋतुसुदर्शनकाल इति दिग्बन्धः श्रीविश्वरूप इति ध्यानम् श्रीमन्नारायण कैङ्कर्यरूपं प्रीत्यते जपे विनियोगः ध्यानम् क्षीरोदङ्गप्रदेशे शुचिमणिविलसैकते मुक्तिगानम् मालाकृप्तस्तनस्तास्फटिकमणिविमुक्तिकैर्मन्दितङ्गाः शुभ्रेरभ्रेरनभ्रेरुपरि विरचितैर्मुक्तपीयूषवर्षे आनन्दीना पुण्यहरिहरिनगरा शङ्खपाणिर्मुकुन्दः भूपालो यस्य नाभिर्व्यदा सुरनिलश्चन्द्रसूर्योच्चनेत्रे कर्णावश शिरोद्यो मुखमपि दहनो यस्य वस्तेयमभिः अन्तस्तं यस्य विश्वं सुरनरखगो भोगि गन्धर्वदेत्ये चित्रं रम्यते तं त्रिभुवनवपुषं विष्णुमिषं नमामि ॐ नमो भगवते वासुदेवाय शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविज्ञानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्सं तं कौस्तुभोभासितङ्गं पुण्योपीतं पुण्डरीकायतक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं नमः समस्तभूतानामादिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुणेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनमबुधश्याममायतक्षामलङ्कृतं चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्सङ्कीर्तवक्षसं रुक्मिणी सत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रये हरिः ॐ विश्वं विष्णुर्वषत्कारो भूतभाव्या भवप्रभुः भूतकृद्भूतभृद्भावो भूतत्मा भूतभावनः भूतत्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्यया पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगाविदं नेता प्रधानः पुरुषेश्वरः नरसिंहवपु श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्व शिवस्तानुर्भूतधिर्निधिरव्ययः सम्भवो भावनो भक्त प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्य पुष्करक्षो महास्वनः अनादिविदनो दाता विदाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो ऋषिकेश पद्मनाभामर प्रभुः विश्वकर्मा मनुस्तस्तस्तविस्तस्ताविरो ध्रुवः अग्राय शाश्वतः कृष्णो लोहितक्ष प्रतर्दनः प्रभुतस्त्रिकगुप्तम पवित्रं मङ्गलं परम्
ईशान प्राणन प्राणो ज्येष्ठ श्रेष्ठ प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी दर्भी मेधावी विक्रमः अनुतमो दुरादर्श कृतज्ञ कृतिरत्मवान् सुरेश शरणं शर्म विश्ववेता प्रजापवः संवत्सरो व्याल प्रत्यय सर्वदर्शनः अज सर्वेश्वर श्रीदा श्री सर्वाधिरक्षितः वृषाकपिरमेयात्मा सर्वयोगा विनिश्चितः वसुर्वसु मनः सत्य समात्मा सामितः समः अमोघ पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुर्विश्वयोनिश्रीश्वराः अमृतः शाश्वतस्तानुर्भरारोहो महातपाः सर्वगः सर्वविद्वानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदाविदाव्यङ्गो वेदगो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षसुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृतः चतुरात्मा चतुर्व्योः चतुर्दंश चतुर्भुजः ब्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदाद्विजः अनागो विजयो जैत्र विश्वयोनि पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामन प्रांशुरमोघः शुचिरुचितः अतीन्द्र संग्रह सर्वो धृतर्मानीयमो यमः वेदो वेद सदा योगी विरह माधवो मधुः अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युतिः अनिर्देशा बभूव श्रीमान् अमे आत्मा महात्रिके महेश्वरो महीभक्ता श्रीनिवासा सतङ्गतिः अनिरुद्धासुरानन्दो गोविन्दो गोविदम्पतिः मरीचिर्धामनोहंस सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभ सुतप पद्मनाभ प्रजापतिः अमृत्युः सर्वदृक्सिंह सन्दात सन्धिमः स्थिरः अजो दुर्मशनः शस्त विशुद्धात्मा सुरारिः गुरुर्गुरुतमो नाम सत्य सत्य पराक्रमः निमिषो निमिषाश्रावि वाचस्पतिरुदारधिः अग्रनिद्रामणि श्रीमन्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्ध विश्वात्मा सहस्राक्ष सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृत्त सम्प्रमर्दनः संवर्तको वाणिरनिरोधारनिधरः सुप्रसाद प्रसादात्मा विश्वभुक्विभुः सत्कर्ता संकृता साधु जनो नारायणो नरः असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्ट शिष्ट कृच्छिः सिद्धार्थ सिद्ध संकल्प सिद्धिदा सिद्धि साधनः वृषारि वृषभो विष्णु वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्त श्रुतिसागरः सुपूज्यो दुर्धरो भग्नि महेन्द्रो वासुदो वसुः वेकारूपो बृहद्रूपा शिखिविष्टा प्रकाशनः ओजस्तेजोदितिदान प्रकाशात्मा प्रतापनः हृदस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रं शूर्भाष्करद्युतिः अमृतं शुद्धरो भानु शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतु सत्यधर्म पराक्रमः भूतभाव्यभवन्नाथ पवन पावनो नरः कामः कामकृत्कान्त काम काम प्रदा प्रभुः युगादिकृत्युगावर्तो नेकमायो महाशयः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रचित्तनन्तचित् इष्टो विशिष्टशिष्टेष्ट श्रीगन्धिनाहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युत प्रतित प्राण प्राणदो वासवानुजः अपायगिरधिष्ठानमप्रमत्त प्रतिष्ठितः स्कन्द स्कन्दाधरो दुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवा पुरन्दरः अशोकस्तारनस्तार शूर शौरी जनेश्वरः अनुकूलाशतावर्त पद्मी पद्मानिपेक्षणः पद्मनाभो रविन्दक्ष पद्मगर्भ शरीरवृते महातीर्दुर्धात्मा महाश्रोगरुध्वजः अतुलः शरभो भीम समयज्ञो हविर्हरिः
सर्वलक्षाण्यो लक्ष्मीभत्सन्वितिञ्जयः भिक्षारो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः मयिदारो महाभागो वेगवानामिताशनः उद्भवाक्षोभनो देव श्रीगर्भ परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्तागाहनो भुवः व्यवसायो व्यवस्थान संस्थानस्थानरो ध्रुवः परादि परमस्पष्ट तुष्ट पुष्ट शुभेक्षणः रामो विराजो मानो नेयो नयो नयः वीरशक्तिमतः श्रेष्ठो धर्मो धर्माविरुत्तमः वैकुण्ठ पुरुष प्राणव पृथुः हिरण्यगर्भशत्रुघ्नो व्याप्तो वायुररोक्षजः ऋतुः सुदर्शनकाल परमेशी परिग्रहः उग्र संवत्सरो दक्षो विश्वमो विश्वदक्षिणः विस्तारस्तावरस्तानुप्रमाणबीजमाद्ययम् अर्थो नतो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्वेण सविष्टो भूर्धर्मयूपो महामखः नक्षत्राणि नक्षत्री श्याम समीहनः यज्ञयुजो महेजश्च क्रतुः सत्रं सतङ्गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमः सुव्रता सुमुखा सूक्ष्म सुघोषा सुखदा सुरते मनोहरो जिताक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वपनः स्ववसो व्यापी नेकर्म कृते वत्सरो वत्सी रत्नगर्भोदरेश्वरः धर्मकृद्धर्मी सदक्षरमसक्षरम् अविज्ञाता सहस्रं शुर्विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमि सत्त्वस्ता सिंहो भूता महेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवगुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगाम्या पुरातनः शरीरभूतभृगोप्ता कपीन्द्रो भूरिदक्षिणः सोमपोमृतपः सोम पुरुजित्पुरुषोत्तमः विनायोजाय सत्यसन्धो दशरसानपतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दो मित्तविक्रमः अम्बोनिरनन्तात्मा महोदधिशयोऽन्तकः अजो महार्घस्वभाव्यो जितामृता प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्द सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्य कृतज्ञो मेदिनिपतिः श्रीपाद श्रीरसाध्यक्षो महाशृङ्गाकृतान्तकृते महावराहो गोविन्द सुषेणकानकङ्गदी गुह्यो गपिरुगाहानो गुप्तशक्रागदाधरः वेदश्वङ्गोजिता कृष्णो धृतशङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वृक्ष पुष्करक्षो महामनः भगवान् भगदानन्दी वनमाली हरायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्य सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुरम्बकन्द परशुधारुरोद्राविनप्रदः दिवस्पृष्ठगरुद्यासो वाचस्पतिरयो निजः त्रिसामसामगस्साम निर्वाणभेषजं सन्न्यासकृच्छमशन्तो निष्ठशान्तिपरायणम् शुभाङ्गशान्तिदाश्रष्ट कुमुदा कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषाभक्षो वृषप्रियः अनिर्वक्ति निवृत्तात्मा संक्षिप्तक्षेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्ष श्रीवत्स श्रीपति श्रीमतम्बरः श्रीधर श्रीशा श्रीनिवास श्रीनिधि श्रीविभावनः श्रीधर श्रीकर श्रेय श्रीमालोकत्रयाश्रयः वक्षस्वङ्गश्रुतानन्दो नन्दी ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा संकीर्तिश्रीर्न संशयः उदीर्न सर्वतः चक्षुरनिशाश्वतः स्थिरः भूषयो भूषणो भूतिर्विशोकशोकनाशनः अर्चिष्मलर्चिता कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रधीरथ प्रद्युम्नो मित्रविक्रमः कालनेमि महावीर शूरीशूराजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश केशव केशिः हरिः कामदेव कामपाल कामिकान्ता कृतागमः
अनिर्देशावपूर्विष्णुर्वीरोऽनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्मादिवर्धनः ब्रह्मविद्ब्राह्मणो ब्राह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहविः सव्यस्तव प्रियस्तोत्रं श्रुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णपूरयिता पुण्य पुण्यकीर्तिरनामयः मनोजवस्येतकरो वासुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमनाहविः सद्गति सत्कृति सत्तः सद्बुद्धि सत्परायणः शुरश्रेणो यजुश्रेष्ठः सनिवासः सुयामुनः भूतवसो वासुदेव सर्वसु निलयो नलः दर्पः दर्पणो दर्पो दुर्धारोता पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दिट्टमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिशताननः एकोनेकसभाकाङ्क्षी तत्पदमनुत्तमम् लोकबन्धु लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमङ्गो वरङ्गचन्द्ररङ्गति वीरः विषमशून्यो घृतशिरश्चलश्चलः अमानिमानो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृते सुमेधमेधजोधन्य सत्यमेधधरधरः तेजो वृषोदितिधारः सर्वशस्त्रावृतम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नेकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्ति चतुर्बाहु चतुर्व्यूहः चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावः चतुर्वेदा विवेकपात् समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरार्यः शुभङ्गो लोकशारङ्गः सुतन्तुस्तन्तुवर्धनः इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतगमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वज्रशनः शङ्खी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्यः सर्वभागीश्वरेश्वरः महारथो महाकर्तो महाभूतो महानिधिः कुमुद कुन्दन कुन्द पर्जन्य पावनो निलः अमृत शोभितावापु सर्वज्ञ सर्वतोमुखः सुव्रतः सीतः शत्रुचिशत्रुतापनः न्यग्रोदुम्बरो स्वातः शारुरन्ध्रादिशोधनः सहस्रचित् सप्तजीवः सप्तेदः सप्तवाहनः अमूर्तिरनघोचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अनुवृतः कृशस्तूलो गुणाबृन्निर्गुणो महान् आदृतः स्वदृतः स्वाच प्रावंशो वंशवर्धनः पारवृत्कथितो योगी योगीशः सर्वकामदः आश्रमाश्रमणः श्याम सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दन्दो धमायितादमः अपराजितः सर्वसाहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः अभिप्राय प्रियारोरा प्रियप्रीतिवर्धनः विहाय स गतिर्ज्योतिर्सुरुचिर्भूतभुग्विभुः रविर्विरोचनः सूर्यः सवितारा विलोचनः अनन्तभूतभुभोक्ता सुखदोर्नेकदोग्रजः अनिर्विनाशधाम श्रीलोकाधिष्ठानमद्भुतः सनातनताम कपिला कपिलव्ययः स्वस्ति न स्वस्ति कृस्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणः अरुद्रकुण्डली चक्री विक्रमोर्जितशासनः शब्दाधिकः शभसः शिशिरः सर्वरिकरः अक्रूरपेशरो दक्षो दक्षिणक्षविडम्बरः विद्वितामो विदाभाय पुण्यश्रवणकीर्तनः उदारणोदश्रुतिका पुण्योदुस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवनपर्यवस्थितः अनन्तरूपनन्त श्रीजिता मयूर्भयपः चतुराश्रो गभीरत्मा विदिशो व्यादिशो दिशः अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मी सुवीरो रुचिरङ्गदः
जनानो जन्म जन्मादिर्भीमो भीमा पराक्रमः अवतरानिलयो दाता पुष्पहासा प्रजाकरः उद्भगः सत्प्रदाचार प्राणद प्राणवापनः प्रमाणं प्राणनिलय प्राणाभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वाभिदेकात्मा जन्म मृत्युचरार्पितः भूर्भुवः स्वसर्वस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञगो यज्ञवाहनः यज्ञभृत्यज्ञकृत्यग्नि यज्ञभुव्यज्ञसाधनः यज्ञतकृत्यज्ञगूयम् अनामानान एव च आत्मयोनि स्वयं जातो वेखानसामगायनः देवकीनन्दनः श्रेष्ठः श्रुतिशापापनाशनः शङ्खबृन्नन्दकी चक्री शङ्खगल्वागदाधरः रतङ्गपाणिरक्षोभ्य सर्वप्रहारणायुधः श्री सर्वप्रहारणायुधः ॐ नमः इति वनमाली गदी शङ्खी शङ्खी चक्री शनन्दकी श्रीमन्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु वनमाली गदी शङ्खी शङ्खी चक्री चनन्दकी श्रीमन्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु वनमाली गदी शङ्खी शङ्खी चक्री चनन्दकी श्रीमन्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु श्रीभीष्म उवाच इतीदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नाम सहस्रं निव्यानम् अशेषेण प्रकीर्तितम् य इदं शृणुयात् नित्यं यशापि परिकीर्तयेत् नाशुभं प्राप्नुयात् किञ्चित् समुद्रेह च मानवः वेदान्तको ब्रह्मणस्य क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्युदान समृद्धस्य शूरसुखम् अवाप्नुयात् धर्मादि प्राप्नुयात् धर्मम् अर्थादि च प्राप्नुयात् कामानवाप्नुयात् कामी प्रजाति च प्नुयात् प्रजाम् भक्तिमान्य सदोताय शुचिता कर्तमानसः सहस्रं वासुदेवस्य नाममेतत् प्रकीर्तयेत् यशः प्राप्नोति विपुलं याति प्राधान्यमेव च अचालं श्रियमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोत्यनुत्तमम् न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजश्च विन्दति भवत्यरोगद्युतिमान् बलरूपा गुणान्वितः रोगतो मुच्यते रोगात् बधो मुच्येत बन्धनात् भयान्मुच्येत भीतस्तु मुच्येत अपानापदः दुर्गाण्यतितरत्यशु पुरुषः पुरुषोत्तमम् सुबन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्ति समन्वितः वासुदेवश्रयो मर्त्यो वासुदेवापरायणः सर्वपापा विशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनः न वासुदेव भक्तानाम् अशुभं विद्यते क्वचित् जन्म मृत्यु जरा व्याधि भयं नैवोपजायते इमं स्तवमदीयान् श्रद्धा भक्ति समन्वितः विजेतात्मा सुखक्षत्री श्रीधृति स्मृतिकीर्तिभिः न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो न शुभामतिः भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे द्यौसचन्द्राग्नक्षत्रगं दिशो पूर्वहोदधिः वासुदेवस्य वीर्येण विधत्तानि महात्मनः शूरगन्धर्वं सयशूरागरक्षसं जगद्वशे वर्ततेदं कृष्णस्य सच्चराक्षरम् इन्द्रियाणि मनोभूति सत्त्वं तेजो बलं धृतिः वासुदेवामहं याहुः क्षेत्रं क्षेत्राय एव च सर्वागमानमाचार प्रथमं परिकल्पते आचार प्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः ऋषयो पितरो देवा महाभूतानि दत्तवः जङ्गमं चेदं जगन्नारायणोद्भवम् योगो ज्ञानं तथा सांख्यं विद्या शिल्पादिकर्म च वेदशास्त्राणि विज्ञानमेतत् सर्वं जनार्दनात् एको विष्णुर्महाद्भूतं पृथग्भूतान्यनेकशः त्रिलोकं व्याप्य भुङ्क्त्वा भुङ्क्ते विश्वाभुक्व्ययः इमं स्तवं भगवतो विष्णुर्व्यासेन कीर्तितं तदेर्यैचित् पुरुषः श्रेयः प्राप्तुं सुखानि च
विश्वेश्वरं भजं देवं जगतः प्रभुरव्ययं भजन्ति ते पुष्करक्षं न ते यन्ति पराभवम् न ते यन्ति पराभवम् ॐ नमः इति। अर्जुन उवाच पद्मपत्रविशालक्ष पद्मनाभसुरोत्तमा भक्तानामनुरक्तानां त्रातभव जनार्दन। श्रीभगवानुवाच यो मां नाम सहस्रेण स्तोतुमिच्छति पाण्डव सोऽहमेकेन श्लोकेन स्तुत एव न संशयः स्तुत एव न संशय ॐ नमः इति। व्यास उवाच वासनाद्वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतानि वासोऽसि वासुदेव नमोऽस्तुते। श्रीवासुदेव नमोऽस्तुते ॐ नमः इति। पार्वती उवाच केनोपायेन लघुना विष्णुर्नाम सहस्रकं पठ्यते पण्डितैर्नित्यं श्रोतुमिच्छाम्यहं प्रभो। ईश्वर उवाच श्रीराम राम रामेति रमे रमे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नामावरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रमे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नामावरानने। श्रीराम राम रामेति रमे रमे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नामावरानने। श्रीराम नाम वरानन ॐ नमः इति। ब्रह्म उवाच नमोऽस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिण ॐ नमः इति। संजय उवाच यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। श्रीभगवानुवाच अनन्यचिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। आताविश्यनाशितिलाश्च भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमानाः संकीर्त्य नारायण शब्दमात्रं विमुक्तदुःखा सुखिनो भवन्तु। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। इति श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रं सम्पूर्णम्। आतो देवा अवन्तु नो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामपि इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि तदे पदं सामोदमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अताभ्यः अतो धर्माणि धारायण विष्णुकर्माणि पश्यत यतो विकानि पस्पशे इन्द्रस्य युजस्सखाः तद्विष्णोः परमं पदगं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवीव चक्षुरा ततं तद्विप्रसो विपन्यवो जागृवागुं ससमिन्दते विष्णोर्यत्परमं पदम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सहस्रशीर्षं देवं विश्वक्षं विश्वशम्भुवं विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं पदं विश्वतः परमान् नित्यं विश्वं नारायणं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगुं शाश्वतगुं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं
Narayana Paro Jyotiratma Narayana Paraha Narayana Param Brahma Tattvam Narayana Paraha Narayana Paro Dhyata Dhyanam Narayana Paraha Yacha Kinchit Jagat Sarvam Drishyate Shruyate Piva Antar Bahishyatat Sarvam Vyapya Narayana Sthitaha Anantamabhyayam Kavigum Samudrentam Vishwashambhuvam Padmakosha Pratikashagam Hridayam Chapyadomukam Adonishtavitashyante Nabhyamuparitishthati Jnanamala Kulam Bhati Vishwasyayatanam Mahate Santatagam Shilabhistulam Bhatya Koshashanibam Tasyante Sushiragum Sushman Tasmin Sarvam Pratishtitam Tasya Madhye Mahanagni Vishwachir Vishwato Mukha Sorabhum Vibhajantishtam Naharamajaram Kavihi Dhirya Gurvamadashai Rashmayastasya Santata Santapayati Swam Dehamapadatalamastakaa Tasya Madhye Varnishika Aniyo Orva Vyavastitaha Nilato Yata Madhyastad Vidyudeke Bhabasvara Nivara Shukavatan Vipita Bhasvatyanupama Tasya Ashikaya Madhye Paramahatma Vyavastitaha Sa Brahma Sa Shiva Sa Harisendra Sokshara Paramasvara Ritagum Satyam Param Brahma Purusham Krishna Pingalam Urvaretam Virupaksham Vishwarupaya Ve Namo Namaha Narayanaya Vidmahe Vasudevaya Dhimahi Tanno Vishnu Prachodayate Om Shanti 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 Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Agyanatimirandasya Gyanajana Shalakaya Chakshuru Militam Yena Tasmei Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev. Today, satsang from Srimad Bhagavatam is taken from Canto 4, Chapter 30, verse 34. Here there is the conversation between Vidura and Maitreya, and Maitreya is telling him, Tulaya malavenapi nasvarganna purambavam Bhagavat Sangi Sangasya Matyanam Kimushashiha. That means, even a moment's association with a pure devotee cannot be compared to being transferred to heavenly planets or even merging into Brahman in complete liberation. For jivas who are destined to give up the body and die, association with pure devotees is the highest benediction. So, such a beautiful verse because he marks the importance of how beautiful it is to spend time with pure devotees, with saints, and is a topic that Guruji remarks a lot of times. And I actually choose this verse because in the last days I was reflecting how my concept and my idea of saints changed since I met Guruji and I started to walk into this path. And as you know, Guruji mentions a lot of times, several times, how he has these desires for us to become saints, to be able to reflect the light of God, to be able to bring change in our surroundings, to the people around us, to be able to bring this love of God. And to be sincere, every time I listen to this, I was, at least at the beginning, I was really skeptical because at least for myself, I always thought it is impossible to attain, to achieve this high level of spirituality. And also because, like,
I grew up in a culture, the Italian culture, where we have such a deep tradition of saints. And I always look at them like almost like aliens, because they belong to a time in the past and a social context completely different of how the reality is nowadays. And always thought that saints cannot exist nowadays, is impossible. And so I remember with this mindset, I went the first time in India with Guruji 1 year and a half ago in April 2022. And I remember we were going around to all these samadhi places in India. And I remember Guruji was so excited, was such in a blissful state. He really loved it. And I was always there, and I was thinking, I really cannot understand this. I cannot somehow connect with all of this. And I was so much focused on all the external madness that you can find in India, all the craziness, how loud is the country, how the smell, all the external contradiction that you can find in India, you know, if you've been there, what I'm talking about. And remember that this feeling built up in all the days we were going through. We went first in West Bengal, then in Pandharpur, and at the end in Vrindavan. And I remember in Vrindavan, I reached the pinnacle of this feeling of, I cannot stay here anymore. I cannot understand what Guruji is able to see here, because he's looking at this place, is like such a bliss. He's looking at the saints, of the samadhi of the saints, and he's so happy. And I'm not. I'm judging so much. There was only judgment in my mind. And I remember I reached this pinnacle of this feeling until we arrived one of the last days in Tinkori Baba Ashram, and it's the place where there was this saint Muralidas Baba that left the body in front of Guruji. And I don't know if you know the story, if you already heard, or I repeat the story. Someone doesn't know the story? You all know? No, okay. So basically, just to be short, just a small side note, like every time like Guruji goes to a pilgrimage, everything is perfectly planned, speaking about all the places where we have to visit. He has an amazing team that plan everything and plan also the eventual plan B, because with Guruji you never know if he want to change something. He's always like this. You want to change something, you have to be ready to change your plan. And so everything was planned, and for that day we were meant to go to different temples in Vrindavan. And the night before, during dinner, a devotee goes to Guruji and says that there is a saint called Vishnudas Baba that lives nearby Keshigat. And he knows him, and it would be nice if Guruji goes to him and see him and just to meet him. And so Guruji says, I don't know, we have other programs to do. And I say, okay, let's go. And then 5 minutes later, no, let's follow the plan. Then let's go, let's follow the plan, let's go. Like this all the night. Then the day after, at the end, we were meant to go to temples to follow our regular program. But then at the last moment, he chose, let's go to see the saint. So we go to see the saints, and it's really sweet moment, because the saint he's staying on a staircase. He's spending all his day on this staircase in the shadow. He has only a fan near to him, and he's doing japa there. It is really old person, super skinny, long beard, long hair, really sweet person. And start to speak with Guruji. They speak in Hindi, and really a sweet moment. There are also pictures of it, this meeting. And at a certain point, this saint, Vishnudas Baba, tells to Guruji, look, there is another saint here, just the nearby ashram. It's called Muralidas Baba, that is really sick, is really ill since month. And so it would be nice if you go to take darshan of him, because he can leave the body in any moment. So, okay, Guruji says, yes, let's go. And we go to this nearby ashram. It's really simple ashram. Like,
the temple is really nice, well kept, a beautiful Krishna, but you see the simplicity and the poverty in a way, like they don't have much. And so we enter with Guruji and plus 200 Western people in this small ashram, and we start to rock some kirtan. And at a certain point, a person arrives and bring Guruji to the saint. So I have the opportunity to follow him, because not all the group goes to see the saint because he's really sick. And we reach a room, the second floor, and we enter in this room and we find this person lying on this bed, and you perceive like he's really sick. And Guruji enters. There are all the main disciples around him, and Guruji start to look. He has closed eyes. Guruji goes at his feet and start to grab the saint's feet and look at him. In that moment, the saint opens his eyes, and they start to stare each other. And Guruji have these Darshan eyes. I think all know what we're talking about. And they are looking at each other at least a good minute. And then the saint closes his eyes, and Guruji says, okay, it's time to go. So we go down where all the group is waiting for us. And we are ready to leave, but then the Pujari stop us. Please stop Guruji and say, please take prasad. And offer prasad to Guruji and to Parantapa. And something that I immediately noticed, that when they offer prasad, they offer a proper meal. They offer like rice with vegetables and other stuff. And usually Guruji doesn't eat rice. He doesn't eat white rice. He cannot eat it. But I remember that he accepted the prasad and he ate all the rice. I was so like, I somehow like, he caught me that moment. Say, why is eating that? He cannot eat it. But anyway, I was observing it. He ate all the prasad, and the moment when he finished, he washed his hand. He stand up. We were ready to leave. It was like a bomb inside the ashram. People start to screaming, running, smashing one to each other. It was pure madness, and we could not understand what was going on. Imagine like we are hundreds of people in this small place. People are running, crying, screaming. It was completely madness. And I look at Guruji, and I see him running and taking the staircase, going again to the second floor. And so I start to chasing him and say, where is he going? And so I go up, and Guruji reached again the room where the saints was staying. And there were all the people around him crying, completely desperate. And basically the saint left the body in that moment, or at least left a few minutes before, but no one noticed. Only in that moment they noticed it. And basically Guruji was I remember like he was in another state, let's say. Was all this madness around him, but he was looking at him like, and was actually looking above his body. He was looking above his body and was completely lost. Has this sight like of like love, pure love, and was looking, and he stayed there. I don't know. I completely lost the perception of time in that moment. But he stayed really long time. I think half an hour, 1 hour. They are looking at the situation. And then at a certain point, we left. And I remember we left, and we took a rickshaw to return back to the ashram. And I was in the same rickshaw of Guruji. And so we look at him and say, hey, what just happened? And the Guruji basically said that in that moment, he spoke with him, like not on a physical plane. There was no conversation, outside conversation. But basically, spiritually speaking, let's say, Guruji asked him, you would like to stay or you want to go? And the saint said, it's time to go. I want to go. And then Guruji basically said, I showed him what he desired all his life. And basically, he gave him the feet of Krishna. He liberated him. And I remember like how this experience like changed me like deeply. I remember like, because initially at that time it was everything new for me, all this path, and I was into it, but I was not taking so seriously. But after I remember this experience, like I start to take way more seriously this path. I start to go deeper into the sadhana, and like most important, I start to appreciate all the sadhana, all the things that they are given to us in this path. And
So I was all this time, since 1.5 years ago, I had this deep feeling of gratitude. First of all, for Guruji, like that he gave me this experience, and it gave me this just a small perception of his greatness, just a spark of who he really is. But then I have also this deep gratitude for the saint, for Muralidas Baba. Even if he didn't do anything to me, I just went there, I took his darshan, and then he left the body. But like the feeling that brought me all this, like, because you could perceive the love that was around him around his devotees, and like the simplicity that they had was really like touching. And I remember how much like actually changed me in this. And to say, so like with this kind of mindset, like we went to India this time, like a few weeks ago, with the resident pilgrimage. I was carrying still this feeling like of deep gratitude for Muralidas Baba. And I remember like we went through like Ujjain, Jaipur, and I was really like having a really good time. I really was enjoying everything of India. It was really beautiful. And at the end of the trip, again, after 1.5 years, we went to Vrindavan. And I was still so long time, so many months that I was carrying this feeling. I'm really grateful. I really want to say thank you to Muralidas Baba. I really want to see him. I want to go to him and see him again. And to say thank you in person, to see his samadhi. And so I remember it was a really full program in Vrindavan, so there was not so much time to go around. But I was always trying to take some time and try to sneak away and go see around Vrindavan. But my main goal was going and find again this ashram. Because this ashram is really hidden. It's not a big ashram. It's not really well known. And I asked also to the resident in the Vrindavan ashram, and every person was giving me like different information. No one knew exactly where it was. So like one day I had a bit of time. I took a rickshaw and I knew somehow where was the area, but I didn't know exactly where. So I went that area, start to search, start to ask people around, and no one knew where it was. So I spent 1 hour going around and I didn't find anything. So I went back, the ashram, and I said, day after, I will try again. So day after, I go again, and I meet a person, same area, I go in the same area, I meet a person and says, Muralidas Baba ashram, yes, it's after Kashigat. So okay, now I have something more like precise, let's go there. In that moment, I start to type on Google Maps, and I hear, hey, Jagadish! And I turn, and it's Aradaka and Kabir on a rickshaw. Say, in that moment, I think, amazing, because Aradaka actually went there. He spent some time there. He knows where this place is. So I goes to him, and I ask him, you know where is exactly? After Kashiga, they told me, but you know where is exactly? Say, no, it's not there. You go it's a few minutes from here. You go right. There is a marble road full of white marble. It's there. It's somewhere there. You go there and you ask there. 100% is there. Say, okay. I say, thanks God, I found Aradaka. So I go there in that road, and I start to going around, search, because I remember the entrance of the place. If I was in front of it, I could recognize it. So I goes around, I start to ask people, and no one knew it. No one knew about this ashram. So I was so disappointed that I returned back. And I had this feeling that like it's not meant to be. I have to go there. And so like we reached the last day, the day of Darshan, when Guruji gave Darshan. And Guruji, I don't have time to go. So Guruji gives Darshan. And I see the Darshan will be really long because there is a lot of people. So I take Darshan, and I have this feeling, I have to go. But it's really late. It's like 7 p.m. It's winter time in Vrindavan, so it's already dark. My mind is telling me not to go, but my heart is telling me to go. And so I tell myself, okay, I have to have a good reason to at least go there. And so I tell myself, I go there, I go take Darshan of Radharaman. This is one of the main deity in Vrindavan. And after that, the place has to be nearby. If I find it good, otherwise, nothing. So I go there, and I take Darshan of Radharaman.
really amazing deity. And I remember in that moment, I looking at him, I do this inner prayer. I say, if I meant to go there, I will not search it now. Now I go to Keshigat and I go take a rickshaw. But if I have to go there, please, you have to find a way to bring me there. So I take Darshan, I go out, and I found the first person in front of me. I say, where is Keshigat? Because in the area of Keshigat, I can take a rickshaw and return back to the ashram. So he showed me the way. So I take this road. It's completely dark. I start to take random road. I say, whatever happens. I start to take random roads. And I remember I took this small road, completely dark, no light. And I came out of that road, and the ashram was in front of me. and in that moment, I see the ashram was so excited, and I see the gate of the ashram closing. They were closing in that moment. And so I was freaking out. I start to run, and I start to knock. Like, please open me. Like, it was like, all this effort, now I have to enter. No? And so, like, they open me, and I see that they were putting to bed the deities. And so really nice deities. And I asked, Murali Das Baba Samadhi, and they pointed me a room. So I go there, and I sit there, and I start to meditate, to do japa. I was really grateful to be there. I start to do my inner prayer, and closed eyes. And then at a certain point, I feel that there is someone in the room, someone entering the room. So I open my eyes, and there is a small kid. So I start to speak with the kid. What's your name? Do you live here? He speaks English. And so I start to speak with the kid. And then at a certain point, a really old person enter, like I think 90 years old at least, really old, skinny old man. He sits in front of me, and he asked me, where are you from? And I told him, Italy. And then I close his eyes and say, where are you from? Like this 4 times. I say, oh my God, what's going on now? It was super weird situation. And then, so I don't know what to do. And I ask him, Murali Das Baba, guru? Is your guru? He is not able to speak English very well. And so I start to say, Murali Das Baba. And through the kid, I received like a translation. It was really perfectly arranged, and start to telling me a bit the story of Murali Das Baba. I was telling him how he was like completely absorbed. When he was chanting his japa, he was completely absorbed, and he was falling in this state of like complete love. And he was used to cry a lot for Radha. He was chanting his name of Radha and crying a lot, crying. He was completely lost in this state. And he was telling me stories of the saint. And then people start to come because they were attracted by the fact that I was there. They were not expected to see a Western person at that time, in that moment. So people start to enter into the samadhi, and we were speaking. At a certain point, they offer me prasad, start to eat. But I have this feeling, I have no clue how long the darshan will be. I have to go. I have to go back. And like, so I tell them, I have to go. And this old person say, don't go. And he wanted to keep me there. I said, tomorrow, 1 p.m., you come, you have prasad, and you will meet with Shamsundardas. That Shamsundardas is was the main disciple of Murali Das Baba, and now is the Mahant of the ashram, is the guru, let's say. And you will meet him, and you will speak with him. And it was so like hard to me for leaving, because the next day we were meant to go to the airport. But it was such a sweet moment. Like he was so sweet, that man. He was with his eyes. You could perceive the love in his eyes, and was completely constantly repeating. Tomorrow 1 p.m. you come, you have prasad, and you speak with Shamsundardas. And I could not. It was so hard. I could not tell him that I could not come because we had the airplane. So I just smiled at him and like say thank you, and I left. Like it was so hard. Like I could not tell him. I didn't tell him that I could not come. It was so hard. So I left. It was like I could not even describe that feeling. It was like I was amazing. So I went back to the ashram. The darshan was still going on, and I met with Swami Chida and started to share with him the story of what happened.
And funny enough, he tells me, actually, I actually went there a few days ago also, and I met actually Shyam Sundardas, that is the Mahant of the ashram. It tells me the story of their conversation, and it's amazing what he tells him. Basically, what he told him is that Muralidas Baba, the saint, used to tell to his main disciple, Shyam Sundardas, the day I will die, a Mahapurusha will come. Mahapurusha is like a high soul, like great personality. And the day before he died, so we went there the 29th of April, 2022. So the 28th of April, he calls Shyam Sundardas and tells him, tomorrow will be the day I will leave the body. So he knew that the day after he will die. And so they arranged all the room. They brought his personal deity into the room. And the day after, basically, Guruji came. And when the Shyam Sundardas, this disciple, saw Guruji, saw all these people, he realized that he was the one that the saint was talking about. And then you know what happened. And that was like this feeling, like it gives you at the end, like say, like we have no clue who Guruji is, because like he's so, whatever he does seems so random and not planned from the outside. But you see, like if you try to go deeper, you see all this big plan behind him, and he's so humble because he doesn't show anything of this. And so like I think like there is not a big takeaway from this satsang. It's just the story. But if I have to give a takeaway, like what actually changed me a lot into this path is one of my favorite sadhana is to study the story of the saints. Because at least for myself, I really enjoy more studying the story of the saints, even more than reading the Lila of Krishna and of the avatars. Because you can see, because most of them, not all of them, some of them there are avatars, but most of them there are regular people, and you can see through the grace of their masters, through the love, to the dedication, to the surrender they have, that you can actually see the change they bring all this in their life. And you can see they become this, how to say, embodiment of that love that always Guruji speaks about. They are able to reflect this light that of God that always Guruji is speaking about. And through reading these stories, you can actually think and see that it's actually possible to attain this in this life. Jai Gurudev. Dalita
Jagadisha Hare. Jaya Narasimhadev, 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 Jaya Narasimhadev. Jaya Narasimhadev, 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 Jaya Narasimhadev. Jaya Prahlad Maharaj, Prahlad Maharaj, Bhakta Swarupa Jaya Prahlad Maharaj. Jaya Prahlad Maharaj, Prahlad Maharaj, Bhakta Swarupa Jaya Prahlad Maharaj. Gurudev, Gurudev, Jaya Jaya Gurudev. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Sri Vishwananda Gurudev, 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 Sri Vishwananda Gurudev. Sri Vishwananda Gurudev, 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 Sri Vishwananda Gurudev. Ramanuja, Ramanuja, Mangala Mangala Me. Yatiraja, Ramanuja, Mangala Mangala Me. Ramanuja, Ramanuja, Mangala Mangala Me. Yatiraja, Ramanuja, Mangala Mangala Me. Yatindraya Karunakaraya, Mangala Mangala Me. Yatindraya Karunakaraya, Mangala Mangala Me. Prapatidarmikarataya, Mangala Mangala Me. Prapatidarmikarataya, Mangala Mangala Me. Ramanuja, Ramanuja, Mangala Mangala Me. Yatiraja, Ramanuja, Mangala Mangala Me. Ramanuja, Ramanuja, Mangala Mangala Me. Yatiraja, Ramanuja, Mangala Mangala Me. Saligrama Pratishtitaya, Mangala Mangala Me. Shaligrama Pratishtitaya, Mangala Mangala Me. Trirangadharini Kodakajaya, Mangala Mangala Me. Virangadharini Kodakajaya, Mangala Mangala Me. Ramanuja, Ramanuja, Mangala Mangala Me. Yatiraja, Ramanuja, Mangala Mangala Me. Ramanuja, Ramanuja, Mangala Mangala Me. Yatiraja, Ramanuja, Mangala Mangala Me. Rangesa Kankarataya, Mangala Mangala Me. Rangesa Kankarataya, Mangala Mangala Me. Mananataya Darinidharaya, Mangala Mangala Me. Mananataya Darinidharaya, Mangala Mangala Me. Ramanuja, Ramanuja, Mangala Mangala Me. Yatiraja, Ramanuja, Mangala Mangala Me. Ramanuja, Ramanuja, Mangala Mangala Me. Yatiraja, Ramanuja, Mangala Mangala Me. Om Jaya Jagadisha Hare, Swami Jaya Jagadisha Hare. Bhakta Janon ke Sangata, Bhakta Janon ke Sangata, Jana me dura kare. Om Jaya Jagadisha Hare. Jo ryave phala pave, dukha vinase manaka. Swami dukha vinase manaka. Sukha sampatti garave, Sukha Sampatti Garave, Kastamite Tanaka. Om Jaya Jagadisha Hare. Mata Pita Tuma Mere Sharana Gaun Mein Ki Sakhi. Swami Sharana Gaun Mein Ki Sakhi. Tuma Vina Ora Na Duja. Tuma Vina Ora Na Duja, Hasta Karun Mein Ki Sakhi. Om Jaya Jagadisha Hare. Tuma Purana Paramatma Tuma Antarayami. Swami Tuma Antarayami. Para Brahma Parameshwara. Para Brahma Parameshwara,
तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम पालन करता मैं सेवक तुम स्वामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो बरता ओम जय जगदीश हरे तुम ओ एका गोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किसा विधि मिलो दयामया किसा विधि मिलो कृपामया तुमको मैं तुमति ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु कहता तुम्हारा शक मेरे स्वामी तुम्हारा शक मेरे करुणा हाथ बजाओ शरण परा तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पापारो देवा स्वामी पापारो देवा सदा भक्ति बजाओ सदा प्रेम बजाओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट भक्त जनों के संकट सन में दूर करे ओम जय जगदीश हरे मन चाकर राखो जी गिरधारी लाला चाकर राखो जी गिरधारी लाला चाकर राखो जी गिरधारी लाला चाकर राखो जी मन चाकर राखो जी गिरधारी लाला चाकर राखो जी गिरधारी लाला चाकर राखो जी गिरधारी लाला चाकर राखो जी चाकर राखो चाकर राखो चाकर राखो जी चाकर राखो चाकर राखो चाकर राखो जी माने चाकर राखो जी गिरधारी लाला चाकर राखो जी श्याम मने चाकर राखो जी गिरधारी लाला चाकर राखो जी गोविंद मने चाकर राखो जी गिरधारी लाला चाकर राखो जी गिरधारी लाला चाकर राखो जी गिरधारी लाला चाकर राखो जी त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव वीर्यं द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव असतो मा सगमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मित्रोर्मामृतं गमय ॐ शान्ति 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 लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति 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 श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम प्रिंस बोलो श्री लक्ष्मण भगवान की श्री भूतभृतेश्वरनाथ नरसिंह भगवान की श्री राधा कृष्ण के लाल की मावतर क्रिया बाबा जी की श्री रमनुजाचार्य की प्रिंस बोलो सद्गुरुदेव श्री स्वामी विश्वनाथ महाप्रभु की
Krishnaya Govindaya Gopijana Vallabhaya Paraya Parampurashaya Hara Karma Mantra Yanta Tantra Oshadari Sustari Samara Samara Mityo Nochai Nochai Om Namo Bhagavate Mahasudashanaya Dite Vala Pritaya Savaryak Shubham Pat Parasme Parabrahmane Paramajyoshe Swa Om Shanti 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 Shri Gurubhyo Namaha Hari Om Jai Jai Shri Radhe Jai